He replied, Sare jahan se अच्छा, Hindustan hamara. India is the best in the world and we are its loved one and it is our heaven. Honorable Directors, Principal Ma'am, teaching and non-teaching staff and excited students, my best wishes to all of you on the occasion of Independence Day. What an amazing day, full of patriotic zeal and the feelings of gratitude, happiness and hope. We are really very fortunate to celebrate the 75th Independence Day in an independent country, and at the same time, we are grateful to our ancestors who have sacrificed everything for our country and for making this democratic constitution of our country and protecting it from foreign invasions. Now let's move on to the most important task of the day, and it is the hoisting of a national flag. I would like to request our directors to hoist the national flag followed by the national anthem. Good morning once again. Before proceeding further, I would like to introduce our respected director, Mr. Dani sir, Mr. Neeraj sir, and our principal, Mrs. Chekla ma'am, who have graced today's occasion with their presence. You being here today with us is a sense of inspiration and motivation for all of us. Thank you all. Now I would like to invite Niva, followed by Aditya, who would be presenting their thoughts with us in their national language Hindi. हिंदुस्तानियों की पहचान है। आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय पर्व है। 15 अगस्त 1947 को भारत 200 साल की गुलामी के बाद ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ था। देश को आज़ाद कराने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, लोकमान्य तिलक और सुभाष चंद्र बोस इत्यादि। 15 अगस्त भारत के गर्व, सम्मान और सौभाग्य का दिवस है। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा देश के सम्मान एवं गौरव का प्रतीक है। मुझे भारतीय होने का गर्व है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। कविता खूनी हस्ताक्षर जो सुभाष चंद्र बोस के ऊपर रचित है वो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन नरवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जंग में लेकिन आगे मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे फूलों से गुंथी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है या शीश काटने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास ने, आज जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास ने। धन्यवाद। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानां धर्मस्य तथात्मानां सृजाम्यहम्। In the Bhagavad Gita, word is O Bharata. There is history and diversity it has. Indian flag is designed in such a way that it displays the country heritage and tradition. Respected directors, principal ma'am, teachers and my dear friends, let me share a few facts about our flag. In the year 1947, Pingalli Venkayya from Andhra Pradesh, an agriculturist and a freedom fighter, designed our flag. At the top, saffron indicates strength, courage and sacrifice. White represents peace. Green, growth of the nation. 24 blue spokes, Dharma Chakra, also called Ashoka Chakra, wheels of law. By law, our flag should be Khadi. The flag which is hosted every year on Red Fort, Delhi is manufacturing from Karnataka Khadi Sangha Dharwad district. It has only authority. According to law, the flag is hosted after sunrise and pulled down by sunset.
flag on Independence Day, Republic Day, our flags flew to space, Mount Everest. It feels more proud in foreign land, which helps the soldiers to sacrifice their lives, keep it flying high in the sky. When various sport persons make our country proud by winning medals in Olympics, Commonwealth Games, Asian Sports Games. Every individual follow the Code of Indian Flag Rule 2002, which is passed by Indian government. India completes 75th year of independence. The government is organizing Har Ghar Tiranga, part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. It shows our efforts and progress. It's symbol of our pride, struggles of great leaders. It's self-rule, respecting country. Our flag teaches unity is a strength. Live with peace, respect humanity, honesty and truth. It represents political, economical, social, educational development of the country, spiritual growth of the people. I asked my parents, will I become a Sacha Deshbhakt by serving as a soldier or by winning medal in sports? My parents taught me, हर एक बूंद बूंद सागर होता. It's like clean our surroundings, helping needy people, follow the government rules like using mask in pandemic, give space for ambulance and traffic rules, paying taxes and penalties, many more. I want all of us to pledge to maintain the dignity of Indian flag, to display it with due honor and respect. Dharma always wins at the end. Rashtra Devo Bhava. Thank you. Jai Hind. It has made us realize the value of being free in a democratic country. आज सलाम आहे त्या वीरांना ज्यांच्यामुळे आज हा दिवस पाहिला. आज सलाम आहे त्या वीरांना ज्यांच्यामुळे आज हा दिवस पाहिला. ती आई आहे भाग्यश्री तिच्या पोटी खाली जन्मलेल्या वीरांमुळे हा देश अखंड राहिला. With this, Arav will express his thoughts in Marathi. आभारी असला नतमस्तक मी त्या सर्वांचा ज्यांनी भारत देश घडवला. सन्माननीय व्यासपीठावरील मान्यवर, वंदनीय गुरुजन वर्ग व येथे उपस्थित माझ्या मित्रांनो, तुम्हा सर्वांना भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आपण सर्वजण इथे आपल्या भारताचा 74वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यासाठी एकत्र जमलो आहोत. मित्रहो, 15 ऑगस्ट हा भारताचा सन्मानाचा व अभिमानाचा दिवस आहे. या दिवशी 1947 रोजी आपला देश इंग्रजांच्या अनेक वर्षांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला. या स्वातंत्र्याकरिता अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. लोकमान्य टिळक, सुभाषचंद्र बोस, मंगल पांडे, सुखदेव, राजगुरू अशा अनेक महान स्वातंत्र्यवीरांनी प्राणपणास लावले. स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशाने कृषी, विज्ञान, तंत्रज्ञान, साहित्य, खेळ इत्यादी सर्व क्षेत्रात उत्तम प्रगती केली आहे. भारताकडे आज आण्विक शक्ती आहे. पूर्ण जगात अनेक भारतीय नागरिक शिक्षण व नोकरी करत आहेत. तरी आज भारतासमोर महागाई, भ्रष्टाचार, गरिबी, प्रदूषण सारख्या समस्या वासून आहेत. या समस्यांचे उच्चाटन पूर्ण झाल्याशिवाय देश सुखी, संपन्न व प्रगत होणार नाही. चला तर मग आपण सर्वांनी एकत्र येऊन आपल्या भारत देशाला जगातील एक आदर्श देश बनवण्यासाठी प्रयत्न करूया. शेवटी मला म्हणावेसे वाटते की तिरंगा आमचा ध्वज उंच उंच फडकवून प्राणपणाने लढून आम्ही शान याची वाढवू. धन्यवाद. जय